जय श्री माता जी। हम सब श्री माता जी को नतमस्तक होकर प्रणाम करेंगे और बंधन लेंगे। तीन महामंत्र और श्री गणेश मंत्र। संतुलन करने हेतु हम अपने दाहिने हथेली को भूमि माता पर रखेंगे, बाई हथेली को श्री माता जी की ओर। पूरे हृदय से श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके
हमारे ईड़ा नाड़ी की ओर से आने वाले सारी दोष बाधाओं को इस भू तत्व में नष्ट कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमारे ईड़ा नाड़ी पर संतुलन दीजिए। दाहिने हथेली को श्री माता जी की ओर रखेंगे। बाई हथेली को आकाश की ओर। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे पिंगला नाड़ी की ओर से आने वाले सारी दोष बाधाएं को इस आकाश तत्व में विलीन कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमारे पिंगला नाड़ी को संतुलित कीजिए, निर्मल कीजिए। दोनों हथेली को भूमि माता पर रखेंगे। श्री माता जी, कृपा करके हमें संतुलन प्रदान कीजिए।
दोनों हथेली को श्री माता जी की ओर रखेंगे। चित्त को सहस्त्रार चक्र पर केंद्रित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। जय श्री माता जी। इसी ध्यान की अवस्था में हम श्री माता जी की अमृतवाणी सुनेंगे। उसके बाद कुछ समय हम ध्यान में ही रहेंगे। We have to understand that we have risen above our human awareness, and at that level we were different, and at this new awareness we are different people, and all our priorities must change. Our value system has to change, and if it has not changed automatically, we have to little bit deliberately work it out, or else we have to see that we become really the spirit and no more of all the falsehood of human awareness should be attached to us, or we should be bothered about. If you see the principle of everything, as I see the principle of everything, now the human endeavor, whatever it is based on gathering property. Whether it is communism or it is democracy or socialism or anything, it's all going round and round the point of property. Property, that may be land, that may be money, that may be anything. All economic activity surrounds that one point is property. So the democracy, though it's a political organization or political theory, actually is based on something very economic.
economical thing called property. Then same about communism, we can say, is the same thing, to how to distribute the property, how to have the property equally, how to make everybody self-sufficient. But as soon as you become a realized soul, you have to know that your properties and your priorities are very different. Your property is your spirit, and your priorities are where you can manifest your spirit and can feel the spirit of others. So the whole concept that was so far obstructing you and limiting your understanding changes into an unlimited area where you start thinking of the spirit. Now, in that concept of the spirit, the property of the spirit is twofold. One, in its nature. The nature of the spirit is, as we call it, Satchidanand. Means it is the joy, then is the truth. It tells you the truth all the time. It gives you discretion, divine discretion. And Chit, the attention that acts, that works, that gives you all the information. So you have got the nature of the spirit thus felt within yourself. What does it want? Or what are its duties? Or why to be the spirit is? Such questions arise later on when we are about to enter into the kingdom of God. Why to enter into the kingdom of God? So in outside, we can say, or the manifestation of the spirit is that it is benevolent. It is hitakari. It gives benevolence to others. It gives you benevolence and it gives benevolence to others also. The only joy in that is benevolence. And you think of all these material things which are so important otherwise, as if they are for giving it to someone just to express your love. So the benevolence that comes through love. Benevolence doesn't come through oppression or suppression or by intimidation, but it comes only through love. And if you have faith in your love, you can work it out. Sometimes it seems, many people have asked me, Mother, why so many saints have suffered and they had to undergo so much of torture. Actually, they never get tortured. They just play the game. They just want to see how far the stupid people can go. Like Christ rode on the donkeys to show that the donkeys are to be ridden. But he can never be dominated, he can never be crucified. In the same way, a saint, if he bears something, he does not in any way suffers. But now the time has come for you to enjoy Sahaja. You have so many friends, you have so many relations, you have the complete group, such a big group, which can be called as a religion, which is with you. So you don't suffer at all, you just enjoy all the time. But the second part of it, that what benevolence we have done to others, is very important. If that is not achieved, if that we have not established, then we cannot go very high up. So the other part of the benevolence is that what have we done for others? Have we raised their kundalini? Have we given them realization? But there are lots of temptations, because we are coming from the human level, lots of temptations that we start dominating others. We start becoming like fascists. We start regularizing. Then this leadership business also comes in. And some people become leaders and some start complaining. As the other day I explained to you, especially for the Australians, I told them what had happened. So one has to realize that it is complete freedom. There is no question of anybody dominating you or suppressing you. It's only in your freedom that you allow others to suppress. Because there are laws, you can always correct the people who are suppressing you, who are troubling you, torturing you. But you do not do it because you are absolutely free, you don't bother. But doing the benevolence to others, when people start
thinking that we are leaders or we are something high-ranking people in Sahaja, they should know first of all that there's nothing like that. You are one part and parcel of one body. And there's nothing like higher and lower. Everybody has his own role to play. Everybody has his own style to work out. But it has to be for the benevolence of the whole and not of an individual. Once you realize that, such a person becomes extremely humble, extremely conducive, and he can articulate in a very beautiful manner with other people, and you never feel that he is your boss, but you feel he's your father, is looking after you with love and affection. But in that love, there's no expectation at all except that of giving. And this giving is the most beautiful thing Sahajayogis can do. For example, now I must thank all the Sahajayogis from abroad who have brought beautiful presents for the Indian Sahajayogis here. So give them a hand. Most of the things I have selected and suggested, agreed, but a day will come when you will be able to do it, everything yourself. You will know what these people need, what should be brought and what should be done. अभी जो मैंने बातचीत की थी उसका सारांश ये है, चौधरी साहब आपके सामने वो चीज़ें इन दिस कंट्री इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल, different concepts. So when you are foreign guests, you see, we call them foreign guests. तो यहाँ रखा दीजिए सब चीज़ें, दिल्ली वाले ये भी रखा दीजिए, दिल्ली वाले सब रखा दीजिए, ला के यहाँ रख दीजिए सब. You all have been very kind to me, but I am very happy that you have been so kind to my husband and my family as well. And you have appreciated the way they have been supporting me in Sahaja Yoga. I did say that the bureaucrats are the ones who always go to wrong gurus because their attention is different. They don't want to have self-realization. They don't want to have something subtler, but say they are worried about their jobs and things like that. So naturally they go to wrong gurus and try to get into troubles. And invariably I have seen most of the bureaucrats have been to all kinds of funny gurus, and they have come to me and said that we've got cancer, we've got this trouble. But I didn't mean that they will go to hell, but I did say it's rather difficult for them to enter into the kingdom of God because they believe in another kingdom. They do not believe in the kingdom of God. But I must say I have lived like a bureaucrat's wife also, and I have also seen what sort of people they are. Whatever it is, they get very much touched by your love. Throughout in our lives, I have been taking very active part in his official things in the sense that I would prepare breakfast for his union leaders who came from Calcutta, or I would go to his ships and get them decorated, and I would speak to all the people in the office. I mean, it was quite an intimate relationship, and everybody now even says that whenever we travel they want to know about you, they want to ask about you. Even in the United Nations, when he's working as Secretary General there with the IMO, I think the people somehow or other look forward to something that is love and that is serene. Very surprising it is that people understand these things even when they are so much in the gross. But now the whole cosmos is working it out for us. I think the attention which goes to these things always helps. The whole cosmos is working it out. We have so many hopes now before us. As far as Gregor is concerned and Rajesh is concerned, these people first came to Sahaja Yoga. They were very brilliant, intelligent people. Of course, it took some time for me to put them right. But once they saw the point of Sahaja Yoga, they were first concerned because they are very socialistic people
concerned about other people. Gregor would bother me so much about everybody else, mother, what's going to happen to them, what's going to happen to this side, what is going to... So I just told him that don't worry about all of them. There's not much place in God's kingdom. So you don't worry. First of all, you establish yourself. You just don't worry about these people, that they should be all right, they should be transformed. Why don't you do it this way? Also, they thought I was a little shy of publicity and things like that. I said, I will do the way it has to be done. The living process has to work out slowly. And gradually it started working out properly. We got the right type of people who grew up in the most matured manner, and they are matured today. And they can now work it out. So now what is about the kingdom of God? We have to bring the kingdom of God on this earth. But to manifest it, it's important that all the Sahajogis have to be honestly Sahajogis. Now, regarding Mr. Srivastava, I have to say one thing, that he's an extremely honest man. He's so honest that if he finds me doing something wrong, he'll put me to the jail. And his sense of honesty really beats me. But there's one thing good about the honesty part of it. Even if people are honest and they know what is right, they may not do it. They may not accept it, and they may not use it as a lifestyle. But his is a case where honesty is his lifestyle. For him, honesty and discipline is lifestyle. So now once he has accepted Sahaja Yoga as something honestly, as he told me, I cannot be dishonest anymore about Sahaja Yoga. I see people being transformed. I can see it. So how can I be dishonest about it? So now, once this happens, then all such people, I always used to say there is some kink in these honest people in the government. And they are the ones who are so honest compared to all others that sometimes it used to surprise me. But now this honesty is going to play the part with the bureaucrats, with the people who are in higher positions, who are at the helm of affairs. It's going to work out, this honesty. And this honesty, if they want to make it into a lifestyle, they all have to go or dissolve into the ocean of Sahaj. There's no way out. Because if you believe this is the honest thing and the truth, and if you are honest, it's just like you put the diamond in the proper platinum. It cannot be anything else. That's why I have great hopes now. Like Gorbachev has come, he's a very honest man. And he believes in his honesty of his faith and everything. Like that we have many other people also who are coming up. And you'll be surprised, one day will come in their honesty, they will understand that peace is important, and secondly, transformation of human beings. And that point, if it breaks through, then Sahaja Yoga is there. You know that Sahaja Yoga is not meant for few or for very few individuals, it is collective. But it is made for the whole of the collective, and it has to work out that way. But as you know, I have never contradicted myself, but gradually I have opened you all to the truth because I didn't want to blast you. But it is now, you can see the future of this world. So beautiful, and I am sure in our lifetime we'll see that beautiful time coming in. May God bless you. अभी जो मैंने बातचीत की थी उसका सारांश ये है कि जब हम मनुष्यता के रूप से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं तब हमारे अंदर मनुष्यता नहीं रह जाती, हम सिर्फ अपनी संपदा के बारे में सोचते हैं और मनुष्यता की जो संपदा है उसे नहीं सोचते हैं। जिस वक्त हम सहयोग में उतर आते हैं तभी हमारे में पहली मर्तबा वो समर्थता आ जाती है कि हम मनुष्यता को अपनाएं। मनुष्यता से बढ़ के और कोई सी भी चीज़ नहीं, ये हमारी समझ में आ जाती है। और समझ में आने का मतलब है कि वो हमारे जीवन में ही उतरने लग जाती है। जब तक हम मनुष्यता के रूप को और उसके मधुर स्वाद को चखते नहीं,
तब तक मनुष्य अपने ही एक आवरण में, अपने ही एक सीमित जीवन में ही आनंदित रहता है। लेकिन जितने भी संसार में बड़े बड़े लोग हो गए हैं, जिनके नाम हैं और जिनको हम लोग आज भी पूजनीय मानते हैं, ये सब मनुष्यता के ही भोगते थे और उसी का आनंद इन्होंने उठाया। सहजयोग के बाद आप भी इसका आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आप आत्मा स्वरूप हो जाते हैं। और आत्मा जो है ये सार्वजनिक है, ये अपने में ही सीमित नहीं है, ये सर्वजन में, सारी सृष्टि में सब दूर इस तरह से अगोचर है, लेकिन हमेशा विचरण करते रहता है। और उसका जो एक प्रभाव है हमारे अंदर, वो सबसे बड़ा ये है कि हमें भी उसी में आनंद आता है जिसमें मनुष्यता है। अगर किसी मनुष्य में हम देखते हैं कि इसमें मनुष्यता नहीं है, या कोई ये जोर ज़बरदस्ती कर रहा है, या अपना ही ठेका लगा रहा है और अपने ही को आगे ढकेल रहा है, फौरन हम समझ जाते हैं कि सहयोगी नहीं। लेकिन उसका असर जो आप पे आता है, या आप जो उसको महसूस करते हैं, या कभी कभी उसके लिए दुखी भी होते हैं, उसकी परेशानी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए। ऐसा आदमी धीरे से ढकेल दिया जाता है और फिर वो सहयोग में लौट नहीं पाता। ऐसे अनेक बार हुआ, आपने देखा है, ऐसे लोग धीरे धीरे ढकेले गए। सब लोग जो अपने को लीडर भी समझते हैं, एक ये मजाक ही है मुझे लगता है, लीडर वीडर। लेकिन अगर समझ लीजिए इस मजाक को भी असलियत समझ लिया जाए, तो भी दूसरी असलियत ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर हम इस लीडरशिप को ये समझें कि इससे हम लोगों पे अपना अधिकार जमाएं और उनसे फ़ायदे उठाएं, तो धीरे धीरे अपने आप ही आप गड़प हो जाएंगे और लोगों को समझने, आप पूछेंगे वो कहाँ गए, हमने कहा गए वो कहीं तो भी। इसी तरह से ऐसा आप और जगह नहीं कर सकते। अगर आप चाहें कि किसी साम्राज्य में ऐसा करें, किसी राज्य में ऐसा करें, तो कभी नहीं हो सकता। लेकिन सहयोग में अपने आप ही मैं देख जाती हूँ कि लोग विलीन हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ घुल गए कि मिल गए कि समुद्र में कहाँ पार हो गए, समझ भी नहीं आता ये लोग कहाँ चले गए। इसलिए अपने को जो लीडर समझते हैं उनको एक आदर्श स्वरूप होना चाहिए, और उनका सबसे बड़ा आदर्श है कि उनके अंदर प्यार का माध्यम इतना है। कोई लोग होते हैं कि अपना अपना बड़प्पन दिखाने की कोशिश करते हैं, कोई बड़ा उसमें भाषण देते हैं, तो कोई लोग होते हैं कि उसमें किसी को दबाते हैं, और कोई लोग हैं कि दूसरों पे हुकूमत चलाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आप करें उससे सिर्फ प्यार ही झलकना चाहिए, उससे ये दिखना चाहिए कि ये प्यार की वजह से हुआ। जैसे कभी किसी को आप नाराज़ भी करना है, या किसी से आपको ज़रूरी है कि डांटने की ज़रूरत है, तो उस डांट में भी उसको पता होना चाहिए कि प्यार ही में डांट रहे हैं। अगर ये हमें डांटेंगे नहीं तो हम ठीक नहीं होंगे। तो हमारा जो हित है उसे हमें साध्य करना है, क्योंकि आपकी जो आत्मा है वो सब संसार का हित चाहती है, उसके बगैर वो तृप्त नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हैं कि अपने आत्मा को तृप्त रखें, तो ज़रूरी है कि आप अपने आत्मिक ज्ञान को दूसरों के हित के लिए उपयोग में लाएं। इतना ही नहीं, आपके अंदर जो चैतन्य है उसका भी उपयोग आप दूसरों के हित के लिए करें। आपका हित अपने आप बन पड़ेगा, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको चाहिए कि आप दूसरों का हित और अपना खुद का ध्यान धारणा से व्यक्तित्व बढ़ाएं, अपना व्यक्तित्व सुंदर और शुद्ध बनाएं, जिससे लोग देख कर कहें कि हाँ ये एक सहयोगी है, कोई तो भी विशेष चीज़ सहयोग है। ऐसे तो आप जान रहे हैं कि धीरे धीरे सहयोग बहुत ज़ोर पकड़ रहा है, और किसी तरह से एक दिन ऐसा आएगा कि सहयोग सबके सामने आके खड़ा हो जाएगा और लोग कहेंगे ये क्या अद्भुत चीज़ है। पर उसके लिए हमें भी मेहनत करनी चाहिए, और उसकी सिर्फ मेहनत यही है कि हम दूसरों के हित की बात करें हमेशा। उसमें खासकर सहयोग में एक बात ज़रूर याद रखना चाहिए कि सहयोगी ये हमारे भाई हैं, बंद है, और बाकी सब जो सहयोगी नहीं है उनकी आपको बात नहीं लेनी चाहिए। जो सहयोगी है उन्हीं के साथ खड़ा होना चाहिए। हो सकता है कभी कभी सहयोगी भी गलती करते होंगे, ये नहीं मैं कहती, पर सहयोगियों से परे जो हैं उनसे उनकी आप मदद मत करिए। जो सहयोग में खड़े हैं उनको अपने साथ दे करके, और सबको एक साथ, एक संघ के साथ आपको पूरी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये सार्वजनिक कार्य है। अगर आप चाहते हैं कि अपने ही घर में बैठे रहें तो आप रुपये सहयोग में मत आए। आप अगर चाहते हैं कि अपने ही घर के रिश्तेदारों की और इनकी उनकी भलाई करें, तो आप सहयोग में ना आए। सहयोग में वही आदमी आए जिसका दिल बहुत विशाल है। ऐसे लोगों का यहाँ कोई काम नहीं, उससे सिर्फ हमें परेशानी होती है और उनको भी कुछ मिलने वाला नहीं। ऐसे लोग कि जिनके झोलियों में छेद है, उनको क्या दे सकता है इंसान। लेकिन जिनके दिल विशाल हैं, जिनके हृदय खुले हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए सहयोग है।
इसलिए मुझे आपसे विनती करनी है, खास करके ऐसे लोगों से जो बहुत अपने को विद्वान समझते हैं। वो लोग, कल जैसे मैंने दिल्ली वालों के सुना तो मुझे बड़ी अंदर से खुशी हुई कि हमारे देहातों में भी सहयोग फैल रहा है। हमें इस देहातों में ही सहयोग फैलाना है, शहरों में फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो अपने आप फैल जाएगा। सबसे ज़्यादा हमें तो मेहनत करनी है वो देहातों में, और जो देहातों में हो जाए तो हम लोग तो देहात में रहते हैं, शहरों में तो बहुत कम लोग रहते हैं और उनको कोई मतलब भी नहीं है, वो उसी संपदा के पीछे में है जो नश्वर है। इसलिए जब देहात में ये चीज़ शुरू हो जाए और जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं ये देहातों में जाकर सहयोग फैलाएं, उससे बड़ा लाभ हो जाए। लेकिन उनके सामने अपने बड़प्पन दिखाने की ज़रूरत नहीं, उनसे बहुत प्यार से, उनसे दुलार से बात करनी चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि भाई ये एक ऐसी अच्छी चीज़ मिल गई है, इससे हमारी सारी तकलीफ़ें, सब जितना भी दुख है वो सब मिट जाए। और मुझे ये आशा है कि एक बार ये क्रांति हमारे देहातों में शुरू हो जाएगी तो सारे दुनिया में फैल सकती है। इसलिए इनको देहातों में ही शुरू करनी चाहिए, ज़्यादा ध्यान देहातों की तरफ होना चाहिए बजाय इसके कि शहरों की तरफ। और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, मुझे मालूम है कि ये चीज़ बहुत बहुत ज़ोरों में फैल सकती है। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। जय श्री माता जी। श्री माता जी को धन्यवाद करेंगे। श्री माता जी, आज के इस सामूहिक ध्यान के लिए हम आपके ऋणी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्य श्री माता जी को नतमस्तक करके प्रणाम करेंगे और बंधन लेंगे।
जय श्री माता जी।